श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह। आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर हैं 104 व 01352722 और 2724506। प्रधानमंत्री ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती कोविड टीका लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड महामारी से निपटने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या समय लेकर टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। एहतियाती कोविड डोज लगाए जाने के पहले दिन 9 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक 152 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4033 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1552 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.62% है। और श्रोताओं, अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की झलक पेश कर रहा है। आजादी का सफर with AIR News. Birth of a Nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. AIR News brings you a glimpse of this struggle every day. The 12th of January is the birth anniversary of Swami Vivekananda. Born in Calcutta in 1863, his original name was Narendranath Datta. Under the influence of his guru, Ramakrishna Paramhans, he became a monk in 1886 and formally accepted monastic vows, after which he came to be known as Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is credited with introducing the Western world to the Indian philosophies of Vedanta and Yoga. The unknown monk of India suddenly leapt into fame at the Parliament of Religions held in Chicago in 1893. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. He founded the Ramakrishna Mission in 1897 and also established many mutts in India, the most important being the Belur Mutt in Howrah district. He also inspired people to join the freedom struggle, thereby contributing to the rise of the national independence movement. He urged the youth of the country to fight colonial oppression, do social service and work for the people
in unity. In his memory, January the 12th is celebrated as National Youth Day, and the week commencing from that day is known as the National Youth Week. The great patriotic saint of modern India and an inspirer of the youth left for heavenly abode at the age of 39 on the 4th of July 1902 in Belur Math. We also remember the revolutionary freedom fighter Surya Sen, who attained martyrdom on 12th of January 1934. When Surya Sen was an undergraduate at Berhampur College in 1916, he joined the Anushilan Samiti. Later, he started teaching and thus came to be known as Master Da. He also worked closely with Sharat Chandra Bose and Chittaranjan Das. The real change in his life came after he was arrested for 2 years, from 1926 to 1928, for anti-British activities. Following his release from jail, Sen embarked on a mission to target the British colonial empire in India. His plan called for capturing 2 major British armories in Chittagong and distributing weapons to other revolutionaries who could then establish an armed unit. After extensive deliberations and planning on the night of the 18th of April 1930, Surya Sen and his revolutionaries embarked on their mission. They did manage to cut off telephone and telegraph links and disrupted the movement of trains coming into Chittagong. But despite capturing these armories, the revolutionaries were unable to find ammunition. Without ammunition, the revolutionaries understood that they couldn't engage the British in an open battle. Thus, the revolutionaries left for the Chittagong Hills. In the ensuing battle, 80 British Army personnel died. The whereabouts of the revolutionaries were leaked by Netra Sen, and Surya Sen was arrested along with his associates. After trials, Surya Sen was sentenced to death. Moments before his hanging on the 12th of January 1934, Sen was brutally tortured by the merciless British. There are reports of how his bones, limbs and joints were shattered with a hammer and his nails torn out. Despite all the torture, Sen's spirit never broke. In his last letter to his comrades before his execution, Master Da wrote, Death is knocking at my door. My mind is flying away towards eternity. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind you? Only one thing, that is my dream, a golden dream, the dream of free India. Never forget the 18th of April 1930, the day of the Eastern Rebellion in Chittagong. Write in red letters, in the core of your hearts, the names of the patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. See you in the next episode tomorrow. तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। और श्रोताओं, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट के अधिक संक्रामक होने की बात कही है, तो हमें अभी भी सतर्क रहना होगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की सुरक्षित दूरी को बनाए रखना होगा और हाथ और मुंह को साफ रखना होगा, जिससे कि हम खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।